Hello students, welcome back to our YouTube channel and also welcome to our Gitishree Study Zone. So आज हम start करबा electric potential due to electric dipole. So start करबा. Here we are going to determine the potential due to an electric dipole. ठीक अछि आमे कोन determine करबा ना potential due to an electric dipole. So let AV be an electric dipole of length 2a and let P be any point where OP is equals to R. ठीक अच्छे आम फिगर देखा ये फिगर आमको देछि कौन ना AB be an electric dipole. AB AB be an electric dipole length होछि 2a length कौन 2a देख पिला माने एठी ए ओर लेंथ होछि 2a ए ओर लेंथ होछि 2a एंड ओ बी र लेंथ होछि सॉरी ए ओर लेंथ होछि a एंड ओ बी र लेंथ होछि a ताहले ए दीटा जाकर लेंथ मिसे केते हि जिवो a प्लस a इज इक्वल्स टू 2a हि जिवो बुझि पारलो तो एठी से हमको देछि जे लेंथ हे गला 2a and let P be any point. इठी P be any point where OP is equals to R. Where OP is equals to R एठी हमको देछि ठीक अछि ताहले let theta be the angle between R and the dipole axis. Let एठी theta एटा होछि हमरा theta. So theta be the angle between R and dipole axis. Here AB is equals to 2a. आम जानिछे AB is equals to 2a. केमिति AB is equals to 2a काहेकि ना एठी OA हे गला A and OB हे गला A. So आमे जदि AB फाइंड करबा ताहेले एठी हे जिवो AO प्लस OB ताहेले AO हमर A देछि प्लस OB मध्य A is equals to 2a. All clear? Okay. So AB is equals to 2a हमें जाने ले केमिति हला AO is equals to OB. AO is equals to OB is equals to A and OP is equals to R. So in triangle OAC भितर हमें देखिबा cos theta is equals to कौन b अपन h तो b एठी हमें केते जानिछे OC एंड हाइपोटेन्यूज OA केते a हमें जानिछे ठीक अछि तो cos theta रे एठी OC is equals to OC हे गला एठी हमहु किछि भी देई नाही तो OA हमें जानिछे a हाइपोटेन्यूज हम जानिछे h सो एठी a हे गला then आमे आपको देखिबा OC is equals to A cos theta तो cos theta is equals to OC upon OA B upon H base upon hypotenuse so OC is equals to A OC is equals to केते हे जिवो A cos theta ताहले हमको तो एठी फाइंड डिटरमाइन करिया को देछि पोटेंशियल ना तो हमें पोटेंशियल फाइंड करबा एठी आमी जानिछे V is equals to केते QA upon 4 pi epsilon naught R vector upon RQ हे गला हमर एठी सो एठी जदि हमर V हे गला एते की V is equals to केते हे गला QA is equals to divided by 4 pi epsilon naught R vector upon RQ ताहले ए जो QA जो टर्म टा हमर देछि सेटा को हमें सपोज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आकार रे नै जिबा P सो एठी केते हि जिवो ना V R vector is equals to P upon 4 pi epsilon naught
केते आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब पाई गला आमे सो एठी हमर फार्मूला एठी हमर v केते बाहरी गला एटा मन रख समस्ते v of r vector is equals to q upon 4 pi epsilon naught r vector upon r cube. This is the important formula of electric potential at any point due to an electric dipole. ठीक अच्छे यार देखिबा हमें केस नंबर 1 कौन ना दिस कौन if the point lies on the axial line suppose z axis नबा हमें so z is equals to plus minus r हिजबो so positive sign is to be taken for point situated on side of A and negative sign is to be taken for point situated on side of B. ताले इठी हमर potential केते हिजबो potential हे गला इठी plus minus P upon 4 pi epsilon naught R vector upon R cube. इठी हमर case 1 हे गला point lying on the axial line. All clear? Case 2 देखिबा point situated on equatorial lines रे हम नबा so z is equals to 0 for all the points situated on the equatorial line so z is equals to 0 so v केते हिजबा हमर एठी केते p upon 4 pi epsilon naught into 0 upon rq is equals to 0. Potential at every point on the equatorial line of an electric dipole is 0. Very important point. Listen carefully and it is samaste man rakha. Potential at every point on the equatorial line of an electric dipole is 0. एक क्वेश्चन टाको समझते देखा द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जो मैंने जानिच प्लीज कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर यार आंसर एबे आम डिस्कशन कले कौन हम यार आंसर the value of electric potential at any point due to electric dipole is केते v of r आम एबे पढ़थिले पा केते हिजबो p upon 4 pi epsilon naught r vector upon r cube अच्छा एठी 1 upon 4 pi epsilon naught आम केते जानिजे के जानिजे k and एठी रहला हमर p vector into r vector is equals to r cube केते हे गला एठी v is equals to k into p vector into r vector is equals to r cube ए ऑप्शन ता हमर कोठी अछि ऑप्शन d is correct बुझि पालो समझते ओके ए फॉर्मूला गुड़ा पिला माने मन रख इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रो फॉर्मूला हो जे v is equals to u divided by q naught and potential difference is del v is equals to minus of integration of a to b e into ds and potential for a point charge v is equals to k q upon r and potential for multiple point charge k and summation of I qi upon ri and potential for continuous charge distribution v is equals to k integration of dq upon r ये सबुतक आमर डेफिनेशन हूँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आमको न्यूमेरिकल्स कला बेले ये गोटे सब आमर हेल्प करिवो देन आमे जिबा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन
इलेक्ट्रिक डाइपोल अल्टरनेटिव मेथड यार अल्टरनेटिव मेथड आम डिस्कशन करवा सो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस q and minus q situated at a and b respectively with ab is equals to a एठी ab is equals to a. Let the dipole be along the x-axis with the center at the origin x is equals to 0. If P be a point at a distance r for the origin A, so such that potential due to the dipole at P shall be V. ताहले एठी केते गलो ना V is equals to 1/4 pi epsilon naught 1 upon AP minus 1 upon BP. बुझिगला? So let AC be perpendicular on OP and BD be the perpendicular on OP. तो सी कहूँ एठी हमर AC टा हे जीवो कोन AC be perpendicular on OP and BD is perpendicular on OP. ठीक है. So OC is equals to OD is equals to A by 2 cos theta. A by 2 cos theta. देखो पिला माने जिते बेले पॉइंट P lies on the y axis जोटा कि आम इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल कहूचे तो ये थीटा आमर केते ही जीवो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 ताहले एठी आमर पोटेंशियल टा केते ही जीवो 0 ही जीवो पोटेंशियल केते ही जीवो 0 ही जीवो आमर इक्वेटोरियल लाइन रो पोटेंशियल 0 हो जीवो. सपोज हम एक्सियल लाइन नबा व्हेन द पॉइंट P lies on the x axis along the axial line of the dipole. So it theta is equals to 0 and V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon r square. एतिके हमर हे गला. ठीक अछि जते बेले पॉइंट P लाई करथवा x axis रे along the axial line of the dipole तो हमर पोटेंशियल एतिकी बाहर जीवो किंतु जते बेले when the point P lies on the y axis equatorial line of the dipole तबे theta is equals to pi by 2 हवा and pi by 2 is equal 90 degree cos 90 is equals to 0 so V is equals to 0 हे गला. बुझि पल्ला? The potential energy of an electric dipole in an electric field. So इठी फिगर हमको दे दीजिए पिला माने देखो an electric dipole in a uniform electric field यार ये फॉर्मूला टा मन रखिबो potential energy of an electric dipole in an electrostatic field is defined as the work done in rotating the dipole from zero energy position to the desired position in the field. So it is always convenient to choose the zero energy position to be the when the dipole is at right angle. It is always convenient to choose the zero energy position. Choose कौन करियो the zero energy position to be the one when the dipole is at right angles जिते बेले dipole कोट थिबो right angles रे थिबो to the lines of force of electrostatic field that is in position xx let the dipole be inclined at any angle theta with the lines of force at any instant. So tau is equals to Pe sin theta where P is the electric dipole moment of the dipole. Let dw कौन a small amount of work done in turning the dipole through a small angle theta d theta. So dw is equals to tau d theta and dw is equals to Pe sin theta into d theta. एठी हमर हेजबा पिला माने फाइनल W वर्क डन टा हमरे केते हिजबो माइनस
PE sin theta, এটা important formula मन रख समस्ते W is equals to PE sin theta. जदि W is equals to PE sin theta है, suppose when theta is equals to 90 degree, जिते थीटा सपोज 90 डिग्री थिबो ताले हमर वर्क डन केते हे जिवो माइनस PE cos 90 डिग्री is equals to 0 कारण cos 90 is 0. So this gives the position of zero potential energy of the dipole. आमे यार पूर्वर पढ़ी जीरो पोटेंशियल. सो तुम मैंने भाव जीरो पोटेंशियल एनर्जी कौन. सो दिस गिव्स द पोजिशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. जिते बड़े हुए थीटा इज इक्वल्स टू 0 थी कौन करवा. व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 ताहले W इज इक्वल्स टू माइनस PE cos 0 डिग्री. So cos 0 is equals to कितने 1. So W is equals to minus PE. बुझी पाला समझते. Okay. Kinetic energy of a charged particle moving through a potential difference. So let V be the difference of potential जोटा कि हमें volt कहूँ between two electrodes. A electrodes and P electrodes. So a charge E moves under the action of electric field due to the potential difference. Work done in taking the charge from A to B gets stored into the charge and appears in the form of its kinetic energy. Charge ये आमर कौन कर चार्ज आनिकिना स्टोर कर देन चार्ज अफियर्स हम को फॉर्म रे काइनेटिक एनर्जी फॉर्म रे. तो ये देखा आम सिंस पोटेंशियल डिफरेंस V between two points is defined as the amount of work done in taking a unit positive charge from one point to other. Therefore work done in taking charge from A to B is given by W is equals to E into V. V एठी कौन velocity. So let B be the velocity of the particle which it acquires on reaching B. एठी B कौन ना velocity. So kinetic energy कौन half mv square. m होची mass of the particle and V आमे जानिचे velocity of the particle. So एठी से अब दे दीची where m is equals to mass of the particle. Since the source of kinetic energy is the work done, therefore KE is equals to half mv square is equals to EV. If E is taken in coulomb and V in volt, so kinetic energy of the particle will be in joule. And if E is taken in stat coulomb and V in stat volt, so kinetic energy of the particle will be in urge. This is important. मन रखो समझते. If E is taken in coulomb and V in volt, so kinetic energy of the particle will be in joule. And if E is taken in stat coulomb and V in stat volt, so kinetic energy of the particle will be in urge. बुझी पाले समझते. ये फॉर्मूला गुड़ा पे मैंने मन रख टर्म इक्वेशन एंड यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V यूनिट कौन वोल्ट. इलेक्ट्रिक करेंट I हूँ तार यूनिट सॉरी I हूँ आम कौन ताको से आम डिफाइन करुचे. इलेक्ट्रिक करेंट I इज इक्वल्स तार यूनिट हूँ कौन एम्पियर एंड रेजिस्टेंस R रो यूनिट हूँ ओम. पावर P रो यूनिट हूँ वाट. The electron volt as a unit of energy. Electron volt कौन. Electron volt होचे electron volt is a unit of energy and it is defined as the amount of energy acquired by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. को आम डिफाइन करवा जोते बेले कौन the amount of energy acquired by an
electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. So conversion between electron volts and joules. हम देखिए an electron moves through a potential difference of 1 volt. The work done is 1 electron volt. So it work done केते हिजबो? Q into del V is equals to केते 1.60 into 10 to the power minus 19 into 1. कारण आम वोल्ट को केते नहीं जो 1 वोल्ट. So 1.60 into 10 to the power minus 19 joule है गला. Thus 1 electron volt is equals to 1.60 into 10 to the power minus 19 joule. Work done unit कौन? joule आम समस्त जानते तो सेठी पाई आम एठी 1 electron volt is equals to 1.60 into 10 to the power minus 19 joule. बुझिपाल समझते. Electric potential, the unit of electric potential difference. एटा पिला माने एग्जाम रे 1 मार्क्स र सेट क्वेश्चन पचारि दिए जे the unit of electric potential difference, work is measured in joules and charge is measured in coulombs. Therefore the unit is defined as 1V is equals to केते 1 joule into coulomb inverse. बुझिपाल समस्ते. So एठी कौन कहला ना तो potential is equals to work measured in joules. work को आमे measured करवा joule रे and charge को आमे measured करवा Q को आमे measured करवा coulomb रे. So एठी केते 1 volt is equals to 1 joule upon 1 coulomb. So coulomb टा तले अच्छी is equals to 1 joule into coulomb inverse. बुझी पाला समझते. नेक्स्ट क्लास रे आमे कौन करबा किछि न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स डिस्कशन करबा जो द्वारा तुम बेटर बुझी पारिबो. जदि वीडियोटी भल लगी थाए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करबा को बिल्कुल भी भूलबेनी. आउ गोटे इम्पोर्टेंट कथा पिला माने तुम जदि यार नोट्स पाइबा को चाहूच ताहले आमर गोटे एप्स अच्छी गीतिश्री स्टडी जोन प्ले स्टोर रु डाउनलोड कर. ता मध्यरे तुम माने सब प्रकार पीडीएफ पाई परबो. थैंक्स फॉर वाचिंग.